ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट आई थिंक अगर हम देखें तो इट हैज़ सो मच ऑफ मीनिंग and it can help you in any ways of life. Like today when we are looking and searching for job all over, you are updating your CV, you are putting all over in different portals, you are trying to approach people for references and all. But yeah, सबके लिए नहीं ये possible हो रहा है. Many of the people are not able to crack and get the roles through. Okay, so this is not just for the job sake, but there are n number of things when you are working in a community, in a social place. There is this networking which actually means a lot in all of our life. uh, my question is, do you really need networking to have a good career? Of course, yeah. In your personal life also you need a networking, and in your career professional life also, if you have a strong networking, definitely it will help you out in your any ways. Means आपको पता भी नहीं चलेगा, but networking will help and do miracles for you. हो सकता है आप जिस कंपनी में अप्लाई करने वाले हो उसमें आपका कोई नेटवर्किंग के थ्रू कोई फ्रेंड निकल जाए, यू कैन आस्क एंड रिक्वेस्ट हिम फॉर रेफरेंस. हो सकता है आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इफ़ यू हैव अ गुड नेटवर्क विथ योर मैनेजर्स और मे बी योर इमीडिएट हायरिंग सीनियर मैनेजमेंट लेवल पीपल, तो आपको एक फेवर या एज ऑन मिल जाए, राइट? सो यू नेवर नो कि ये नेटवर्किंग कब आपको काम आ सकता है. समटाइम्स बैक कोई फ्रेंड जो आपके साथ पहले रहता होगा, कोई फ्लैट में या कोई कॉलेज में पढ़ता होगा, यू कैन suddenly find him or her in your office and he can help you out, right? So this is all because of networking. So networking is not something जिसको which you have to fear out of. इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, you have to be good in what you are doing, you have to be best in what you are producing it out, you have to be present, you have to be connected with the people. Never feel that ये इंसान मुझे क्यों काम आएगा, या why should I keep a relation with this person or this particular lady. You never know which person where can get you help out of. So I would suggest that networking is a very, very important, integral part of all of us life. जो हम लोगों को we should definitely try कि हम network करते रहना चाहिए. Not just in LinkedIn, not just in our corporate life. वहाँ पे तो काम आएगा ही आएगा, because today आज की life में we ask कि we can ask for referrals and all. But referrals भी कब होंगे? जब हमने networking की होगी तभी हमारे referrals होंगे ना, तभी हम referrals के लिए request कर सकते हैं. तो ये एक दिन में नहीं चालू होगा. It's a long way process where you have to be consistent, where you don't have to do anything. मतलब आपको चापलूसी नहीं करनी है उसके लिए, आपको जाके अननोन लोगों से बातें नहीं करनी है. बट या जस्ट डू योर वर्क द बेस्ट सो दैट योर वर्क इज हाईलाइटेड एंड पीपल नो यू, हाँ, दिस एंड दिस पर्सन has done these things. And maybe on LinkedIn, just be proactive so that people can see your profile on and off, and they can know that, yeah, person with this name is always active and he posts good things, and he responses also or reacts also on different posts. Or maybe आपकी office में कोई activities हो रही है तो then participate over there. Try to involve yourself in the discussions and the speeches over there. So I think just अगर आपकी presence effective है तो networking becomes easier for you. So be there where you are and show yourself off. Okay, आपकी पर्सनालिटी को आप जितना दिखाओगे उतना आपकी पर्सनालिटी खिल के आएगी, एंड देन दैट कैन हेल्प यू टू गेट मोर एंड मोर पीपल के साथ नेटवर्किंग. So yeah, this is what I wanted to tell you guys, that start building your network today. This will be helpful for you in your career, in your personal life, in your uh, relationship building and each and everything. I think अगर आपको networking आपकी अच्छी है, if 20 people knows you from where you are coming, definitely कभी ना कभी आपको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा. जॉब में होगा, पर्सनल लाइफ में होगा, पर्सनल रिलेशनशिप्स में होगा, फाइनेंशियली भी हो सकता है, बिकॉज यू नो पीपल वेल, यू आर वेल कनेक्टेड इन द कम्युनिटी, you have a good rapport, you build up in a nice way, you present up nicely. So yeah, networking helps, and start building your network today without any delay. अगर अभी तक आपने नेटवर्किंग नहीं की है, not a problem, start doing it right away.